जानेंगे हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, अभी हालांकि अभी 2024 मेंस यूपीएससी क्वेश्चन में ये आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, चलो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ ओवरव्यू। तो ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए हमको? द proposal aim to the synchronize the elections to the Lok Sabha and all state assembly के बाद में इलेक्शन होगा। If implemented, it will be allow करेगा voters to the cast the ballots for the both Lok Sabha और state assembly के लिए भी देंगे तो एक ही दिन में on same days। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि streamlines the election processes, reduce करेगा election expenditure and ease of the strain of administrative resource के लिए भी ये हेल्प करेगा। The one nation one election bills क्या देखिए, two bills which aims to achieve one nation one elections were introduced in Lok Sabha 17 December को। The Constitution 129 Amendment Bill 2024 seeks to the whole simultaneous election for the Lok Sabha and State Assembly. The Union Territory Laws Amendment Bill 2024 proposed to make the amendment in the Government Union Territory Act जो 1962 में था, the Government of National Capital Territory of Delhi 1991 का, the Jammu Kashmir Recognition Act 2019 and to align their the electoral cycles with the Lok Sabha polls. ठीक है, together the two bills aims to achieve करके simultaneous election across the state and union territory with the general polls हिसाब से। देखिए, not a new idea, the simultaneous elections were in the form, इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था जब 1951 में till 1967 तक हुआ था, आपको याद रखना है। The first general elections to the Lok Sabha and State Assembly were held together was the 1951 to 52 term period अंदर था। The practice was continuous for the three consequent general elections हुआ था, जब उसके बाद 1960, 1957, 1962 and 1967 तक हुआ था। तो आपको याद रखना है, थ्री जनरल टर्म हुआ था उसके बाद continuously। These cycles were the disrupted in the 1968 and 1969। क्यों हुआ था? देखिए, due to the permissions of a dissolution of a shown state assembly, the fourth Lok Sabha was also dissolved हो गया था जब permanently 1970 में। देखिए, behind India's strategic force permission dissolution, the terms extension disrupt the cycle of simultaneous election leading to the current patterns of a staggered election schedules across the country। देखिए, लोकसभा year of a constitution of a Lok Sabha and ओवरऑल टर्म देख सकते हैं। फर्स्ट वाला देखिए 1952 5 इयर्स कंप्लीट हुआ था। सेकंड में देखिए 1957 से 5 ईयर कंप्लीट हुआ था। थर्ड देखिए 1962 5 ईयर कंप्लीट हुआ था। फोर्थ में ये फिर देखिए डिस्टर्ब हुआ था, देखिए अब 1967 तक हुआ था, 3 इयर्स 10 महीने चला था गवर्नमेंट। उसके बाद फिफ्थ में देखिए 1971 में, तो फिफ्थ ईयर 10 मंथ चला था, जिसमें 1977 तक हुआ था 2 इयर्स 5 मंथ। सेवंथ में देखिए फ्रेंड्स टर्म लोकसभा का 1980 से 5 इयर्स चला था। 8 में 1984 से लेके 5 इयर्स। 9 में देखिए 1989 1 ईयर 3 मंथ चला था। 10 में देखिए फ्रेंड्स 1991 5 इयर्स चला था। 11 में 1996 से देखिए 1 ईयर 6 मंथ। 1998 में देखिए 1 ईयर 1 मंथ। 1999 में 4 ईयर्स 4 मंथ। फिर देखिए 2004 से लेके चला था 5 इयर्स। 2009 से 5 इयर्स। देन 16 देखिए 2014 से 5 इयर्स। 17 देखिए 2019 से 5 इयर्स। अभी 18 देखिए हो गया है 2024 से लेके चल रहा है। देखिए हाउ विल बी इम्प्लीमेंट कैसे होगा? देखिए इन मार्च 2024 द हाई लेवल कमिटी चेयर बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड के उनका रिपोर्ट। द कोविंद कमिटी द एंगेज इन 65 मीटिंग्स विद ए रेंज ऑफ ए स्टेकहोल्डर्स टू गैदर फीडबैक, took 191 days of extensive consultation to complete the report. The committee recommended a two-step approach to lead to the simultaneous election. जैसे कि step 1 देखिए, simultaneous election to be
be held for the Lok Sabha and State Assembly और क्या सेकंड क्या बोल रहा है स्टेप में इलेक्शन टू बी म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत टू बी हेल्ड विथिन 100 days जो होल्डिंग करेगा लोकसभा एंड असेंबली मतलब असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन के बाद 100 दिन के अंदर ही मतलब म्युनिसिपैलिटी और जो पंचायत के इलेक्शन एक ही बार में हो जाना चाहिए from of a fragmented to the synchronized क्या देखिए the COVID committee recommended क्या था framework for the holding a simultaneous elections at the time of the next election of Lok Sabha all the state assembly and the local bodies should be dissolved हो जाएगा irrespective of the जो उनका जो भी remaining term हो of a one time measures हिसाब से currently a legislative is elected from the term of 5 years होता है hence a huge legislatures of at any point of time would be render them to be out of synchronization for the next simultaneous election to edit this committee क्या कर रहा है recommend करता है that fresh election होगा कब the hung legislature for the reduced equivalent to the remaining period of 5 years